ओके, प्रैक्टिस करते हैं इस टाइम पे। देखिए सिंपल यहाँ पे ये जो बैंड बना है देन इसका पोर्शन ये फ्लेंज इस पर और ये इसका बेस है। तो सिंपल इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे और पहले तो मैं इस बैंड को बनाता हूँ, ठीक है, इसको ड्रॉ करेंगे और यू कैन ऑल्सो सिंपली स्टार्टेड फ्रॉम दिस बेस। तो पहले इसको ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे देखिए 50 एंड देन 90। ओके, एंड देन इसमें जो डायमीटर है, आउटर डायमीटर यहाँ पे 30 है एंड देन इनर डायमीटर यहाँ पे इसका 26 है, ठीक है। तो इसको ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। सॉलिड स्कीम पर आते हैं यहाँ पे, ठीक। सॉलिड स्कीम पे एंड देन स्केच। अब मैं इसके लेता हूँ फ्रंट प्लेन और देन स्केच यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसके लिए सिंपली एंड देन यहाँ से। ओके, and again take smart dimension and specify the dimension. This is 90 and this is 50. Okay, now again then take the radius which is 30. Okay, this is 30. Now take fillet and specify the 30 radius and then size. Now okay, and then again. Then features and shift boss base. Okay, and select the circular profile. Okay, so here you got. Now specify the outer diameter which is 30 and thin आप यहाँ पे दीजिए 2। देखिए यहाँ पे जो आउट हो रहा है फिर इन हो रहा है कि आउट हो रहा है, बट हमें क्या करना है, चेंज दी डायरेक्शन, ठीक। तो आउटर यहाँ 30 रहेगा और इनर जो होगा वो 26 होगा। चेक कर लेंगे इसको एक बार। देखिए यहाँ पे इवेलुएट एंड देन चेक दिस। तो मैं यहाँ पे ये डायमीटर लेता हूँ 30 एंड देन ये देखिए यहाँ पे 26। ओके, देन आई गो। ये पोर्शन तो ड्रॉ कर दिया। देन इसमें जो फ्लेंज है उस फ्लेंज को ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। एंड देखिए इसमें यहाँ पे मैं इस फ्लेंज को थोड़ा जूम करता हूँ और नेक्स्ट यहाँ देखिए ये देखिए इसका जो आउटर डाया है इसमें यहाँ पे 40 डाया एंड देन उसके बाद से ये 10 एंड देन 20 डाया मुझे यहाँ ड्रॉ करना है। देन सेलेक्ट दिस फेस, ओके, एंड देन स्केच। नाउ अगेन टेक सर्कल एंड ड्रॉ दिस सर्कल with the center and specify the diameter which is 40 diameter. Next again take this convert these entities and now again draw the circle. Same here. Now right click and smart dimensions, specify the diameter which is 20 diameter and then 10 diameter. Okay, 20 and 10 diameter. Now again select this face, select this circle and hold the control key and this circle at the relation equal. Now select this circle and hold control key and at the relation equal. Now again select the center point and this point and this point, hold the control key and at the relation horizontal. Again specify the distance which is 30. Then again same here, this is also 30. Yeah, next again take line and draw this line. Again select this line and hold the control key and this line at the relation tangent, and same here select this line and this circle at the relation tangent. Now select this line at the relation tangent. Now select this line and this circle and at the relation. सेम यहाँ भी हमें लाइन और सर्कल में टेंजेंट रिलेशन जो है उसको ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। उस रिलेशन को ऐड कर देते हैं सिंपल। नेक्स्ट एंड दिस also. Okay, take power trim and trim the extra part of this line from here to this. Okay, next
simple. Next again. Then take a smart dimension, specify the distance from here to this, and now same again here. Okay. And take forward, right click and then extruded boss base, and यहाँ पे जो डायरेक्शन हमें चेंज करना है, ठीक है, from not from mid plane, it is from blind, and change the direction. Okay, and selected the contour. Okay, and specify this is 10. Yeah, I hope कि clear हुआ होगी आपको, ठीक है. तो ये planes भी यहाँ पे बन गई है. Then again उसमें जो बेस पोर्शन है, बेस को ड्रॉ करेंगे. देखिए यहाँ पे जो बेस है, तो इसके पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से यहाँ पे इसका सेंटर जो है वो 18 है, देन 50 50 एंड देन 15. तो सिंपल. एंड देन इसका जो फेस है सेम यहाँ पे है, तो सिंपल सेम ही प्लेन पर मुझे यहाँ बनाना है, राइट प्लेन पर. एंड देन ओके, ठीक. नेक्स्ट टेक लाइन, यहाँ पे टेक लाइन एंड ड्रॉ. Okay, and select this line and delete it. Now again specify the dimensions. This is 50. Okay, this is also 50. Okay. And this is 15. Next again, the distance between these and this is 18. Okay, now again right click and extruded boss base, and boss base देखिए यहाँ से mid plane से मुझे लेना है इसमें, from mid plane to 50. Okay, from mid plane to 50. Now again, yeah, I hope कि clear हुआ होगी, ठीक है. Next simply then again file and save as, save the model, and file, make drawing from part, select the A3 sheet, and then again drawing, choose the standard view. Okay, जिसके standard view है वो आपको यहाँ show हो जाएंगे. Simply drawing and or left click on it, preview on the case में, and choose the isometric view, set it with edge. Now put here. Then again okay. नेक्स्ट यहाँ पे प्लेन जो मुझे चाहिए, एक्चुअली इस पोर्शन को मैं करता हूँ डिलीट, सेक्शन एंड देन वर्टिकल कट, और कट लेते हैं यहाँ से इसमें, देन ओके, ठीक है. नेक्स्ट अगेन एनोटेशन, मॉडल आइटम एंड इंपोर्ट आइटम इनटू ऑल व्यूज, ठीक है. तो देखिए 30 एंड देन 15, ठीक है. ये बेस है यहाँ पे 30 15, and this is 18 from this point to this point, and this is 50 50, and this is also 50. This is width 2, तो हमने थिकनेस ली है इसकी. एंड नेक्स्ट अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 40 एंड देन 10 एंड 20. तो 10 एंड 20 की यहाँ जरूरत नहीं है हमें, ठीक है. और ये 40 हम यहाँ भी शो कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट 30
and then again 10. ओके या आई होप कि क्लियर हुआ हो ये, ठीक है। देन फाइल सेव एज और सेव एज टाइप में यहाँ चूज कीजिए एडोबी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ एंड देन सेव इट। ओके, पीडीएफ जनरेट कर देगा ये। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। तो इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सॉलिडवर्क्स सीरीज को फॉलो करें। थैंक यू।